Hello to all of you. So in the last class we have studied about the poliomyelitis. Now in this I am going to tell about the treatment of the poliomyelitis. So when we are talking about the treatment, we have to set certain aims for the treatment because aims makes the treatment easy. So also in this there will be aims for the treatment. The first aim of the treatment is, जो भी हमारा ट्रीटमेंट होगा उसके लिए पहले हम अपने एम्स डिसाइड करेंगे. जो हमारी ट्रीटमेंट का पहला एम है वो है हमारी सारी मेजर्स को यूज़ करके पेशेंट की लाइफ को बचाना. आवर फर्स्ट एम इज़ टू प्रिवेंट द लाइफ ऑफ द पेशेंट बाय यूज आवर ऑल द मेजर्स. This is the first aim. So the second aim is to maintain the weak muscles in good conditions as possible. You can use all your equipments, all your exercises to maintain the weak muscles in a good position. This is the second aim. So our third aim is the immediate recognition. Immediate recognition is refers, जब भी हमने देखा हमारे पेशेंट को ये डिसीज़ है एंड वी आर सेटिंग द एम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएट रिकग्निशन कम्स. इमीडिएट रिकग्निशन में आप पेशेंट को देखते ही विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उसका ट्रीटमेंट प्लान करोगे. द इक्विपमेंट्स, द एक्सरसाइज एंड द ओवरऑल प्रोसेस यू नीड टू ट्रीट द पेशेंट इज refers to the immediate recognition. Then the treatment of medical complication. If you are saying that there is a complication or there are many complication in the disease, so you can also find out the treatment of that particular medical complication. Our fifth goal is the prophylaxis and therapy of emotional disorder. First, you need to understand, as the patient is suffer from a disease, he or she get emotionally weak because of that the disease, because he or she may not face the social economical environment with that particular disease. So you need to maintain the emotional part of that patient so good. And then the prophylaxis is nothing, it is a measures designed to preserve the health of the patient and to prevent the spreading of the disease. जो भी आप मेजर्स लोगे टू प्रिवेंट हेल्थ ऑफ द पेशेंट एंड measures to prevent the spreading of that particular disease. So this is the prophylaxis which all of you need to focus on this. Now the sixth is the surgical treatment of the correctable deformities or the defects. If you seen any defective in the patient, any defect in the patient, and you know that this defect can be correctable or corrected by a surgical process, so you also need to focus on that. Surgical treatment of correctable defects. Then you need to socially, economically and occupationally and physically rehab the patient. Socially, economically, occupationally and physically rehab the patient. फर्स्ट वी नीड टू सोशली रिहैब द पेशेंट. सोशली रिहैब में कुछ नहीं होता, इसमें आप पेशेंट का इंट्रैक्शन देखोगे विद फैमिली
एंड उसकी लिविंग सिचुएशन को देखोगे, उसका लाइफस्टाइल देखोगे, फैमिली फाइनेंसेस देखोगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज देखोगे। आप पेशेंट को असेस करोगे कि अगर उसकी डिसेबिलिटी और डिसीज़ की वजह से इन सारी चीज़ों में दिक्कत है, तो आप उसके जो लाइफस्टाइल है, जो भी उसकी कंडीशन है, आप उसको चेंज करोगे। उसका रहने का तरीका जो भी उसके लिए बेस्ट सूटेबल होगा, आप उसको पेशेंट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। देन आप उसकी होम कंडीशन को फाइंड करोगे, उसकी फैमिली, उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस जो हैं, या उनकी जो भी जॉब सिचुएशंस हैं, जो भी हॉबीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को देखोगे, उसके डिसीज़ में देखोगे, और उसकी डिसीज़ की वजह से जो भी इन चीज़ों में कमी आ रही है वो आप दूर करोगे। दिस इज़ द वर्क ऑफ द सोशली रिहैबिलिटेशन, सोशल वर्कर, एज अ सोशल वर्कर। सो फिर आप पेशेंट को और उसकी फैमिली को एजुकेट करोगे कि किस तरीके से उसकी फैमिली को पेशेंट की डिसीज़ के साथ डील करना है, जिससे पेशेंट आपका इमोशनली भी डिसेबल ना हो, एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश करे, घर में बैठ के ना रहे। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ द social rehabilitation include. Now let's talk about the economical rehabilitation. Economical rehabilitation is a nothing but you need to find a job or any kind of opportunities for the self employment and avenues for the economic betterment. जो भी पेशेंट इस डिसीज़ से, किसी भी टाइप ऑफ डिसीज़ से सफ़र है, एंड आप उन्हें इतना स्टेबल करोगे कि वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स, अपनी इकोनॉमिक, अपनी अर्निंग के लिए जो भी बेस्ट है उनके लिए सूटेबल, आप वो उन्हें प्रोवाइड करा सको, या आप उन्हें इतना केपेबल करो कि वो खुद के लिए अर्निंग कर सके फॉर द इकोनॉमिक बेटरमेंट। सो दिस इज़ बेसिकली द इकोनॉमिकली रिहैबिलिटेशन। So occupational rehabilitation involves the occupational therapist. Occupational therapist का ये काम होगा कि वो पेशेंट की डेली एक्टिविटी सच एज ड्रेसिंग, ईटिंग, बाथिंग और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जिसमें पेशेंट हिमसेल्फ और सेल्फ इन्वॉल्व है, वो पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाए रखे, वो किसी के ऊपर, पेशेंट किसी के भी ऊपर डिपेंड ना हो अपनी किसी भी एक्टिविटीज़ को लेके। So this is the work of the occupational therapist in the occupational rehabilitation. Now let's talk about the physical rehabilitation. फिज़िकल रिहैबिलिटेशन में फ़िज़िकल थेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो जिसका काम होगा मैक्सिमम मूवमेंट रिस्टोरेशन, पेशेंट के मैक्सिमम मूवमेंट कराना, उसके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, बैलेंस। सो दिस ऑल इन्वॉल्व्स in the physical rehabilitation. So let's start the treatment. Our aims are finished. Now the treatment. The first is based on the acute stage. So in the acute stage, you need to focus about on the relief of headache, the pain in the back, and the spasm in the legs. First, you need to focus on this. Then, as we are talking about the child, so child should be rested in the bed. Rested in bed with firm mattress, back is supported, at lumbar region by board, प्लस जो आपका बैक सपोर्ट होगा बोर्ड से, वही सेम आपका जो पैरालाइज्ड लिम्स हैं उनके लिए भी सपोर्ट होगा। सो दिस इज फॉर द चाइल्ड शुड बी रेस्टेड इन द बेड with a firm mattress, and there should be a support by the board at the back, at lumbar region, plus at the paralyzed limb. Then for the pain relief, we need to give hot moist towels. For the relief of the pain, also analgesics used for pain relief.
So the feet are supported by a rigid boards in padded KAFO. KAFO is knee ankle foot orthosis. So in early stage, spinal bracing is needed if the back is the weak. Early stage, so if the back muscles are the weak, spinal bracing is needed. Now knees and hips are mildly flexed and arms are positions in abduction with mild support. And your knees, the patient's knees and hips are mildly flexed, arms are abducted with mild support. Prevention of the pressure source is very important by changing the position, because if the patient is in the supine lying for a very long time, source may develop, or in any position for a patient इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, पेशेंट अगर किसी पोजीशन में होगा एक लंबे समय तक, तो प्रेशर सोर्स डेवलप होना इज़ वेरी कॉमन. सो प्रिवेंशन ऑफ द प्रेशर सोर्स by changing the position. You can change the position by using the pillow or support by the pillow. In every 2 hours, in every 2 to 3 hours, you need to change the position and support the patient by the pillow. So let's come to the treatment of the stage 2. That is the convalescent stage. So first we talk about the modes of treatment, which modes we are using for the treatment. इफ़ द पैरालाइज जो हमारा पैरालिसिस है पेशेंट का, वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो हम पेशेंट को बिठा देंगे अर्ली स्टेज में. इफ़ द पैरालिसिस ऑफ द पेशेंट इज़ नॉट वेरी सीवियर, so we need to sit a patient in early stage. The sitting should be supported in a padded chair. This treatment is in very detail. You can also use the pillow or a padded cushion or a padded mattress for the sitting, but you need to focus that the sitting should be supported. We can use the parallel bars for the patient balance, wheelchairs and orthosis. We can use Faraday stimulation to restore the memory of the muscles that are weakened. Then strengthening exercises. आप पहले स्टार्ट करोगे पैसिव, then active assisted, then active resisted. Make sure this all treatment is in the convalescent stage, when the paralysis of the patient is not very severe. So if there is no severity in the paralysis, patient can itself do the following exercises. He or she can do the passive, active assisted and active resisted. We can do on the patient because the paralysis is not severe. Now we can give the balancing exercises like sitting to standing, walking training, etc. Then the hydrotherapy. Hydrotherapy is also a very good exercise for the balance. You can take the patient in the pool if the patient is comfortable with you.
And then you can do the balance exercise in the pool also to regain the strength of the muscles. Strengthening of the muscle के लिए hydrotherapy is a very good exercise or is a very good therapy. Now let's talk about the treatment in stage 3. That is the rehabilitation stage. Stage 3. So in stage 3, you need to prescribe the orthosis for the patient. Orthosis prescription. So, so before prescribing the orthosis, you need to focus on the some of these aspects. The first is the power of the hip abductors. For wearing an orthosis and walking in the orthosis, the hip abductors power should be good. Extensors and knee quadriceps. So you need to assess the power before prescribing the orthosis. Then hip, knee and ankle stability should be good for wearing the orthosis. Then you need to measure the limb length, because if there is a limb length discrepancy, the orthosis prescription is different. Plus, you need to assess the gait pattern of the patient. Then contractures and deformities. You need to find out whether there will be the contractures or there are the contractures or the deformities present in the particular patient. Now there is a note. There is a very important thing, that if there is a deformity, orthosis cannot be given, cannot be prescribed to the patient if the patient have the deformities. In the case of deformities, orthosis not be given. But in case of minor deformity, orthosis can be prescribed in a certain way. That is, orthosis can be fitted with limb in a corrected position. Fitted with limb in correct position. So this is how orthosis prescription has to be done. So there is one more note, that bilateral KFO, bilateral knee ankle foot orthosis and hip knee ankle foot orthosis should not be given without testing the power of upper limb and the grip of the upper limb. So bilateral KAFO and HKAFO should not be given without testing the power of the upper limb. So this is the orthosis prescription. Now let's come to the training of the activities of daily living. एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, हाँ पेशेंट जो भी एक्टिविटी करता है, फॉर एग्जांपल हम अपना लेते हैं, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उठ रहे हैं, उठ के पानी पी रहे हैं, देन वी गोइंग फॉर दी बाथिंग, देन वी आर गोइंग फॉर ड्रेसिंग, हम कॉम करते हैं, कुछ भी असेसरी पुट करते हैं, कपड़े पहनते हैं, शूज़ पुट ऑन करते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, पूरे दिन में हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, यही सारी पेशेंट करेगा. सो अगर कोई भी पेशेंट डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, सो उसको जो भी उसकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग होंगी वो हैम्पर्ड होंगी.
कोई भी जो नॉर्मल इंसान वो एक्टिविटीज़ इजीली करेगा जैसे वो पेशेंट पहले करता था, सो डिसीज़ के बाद वो उस तरीके से वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। सो उसके लिए ट्रेनिंग होती है, लाइक फॉर वॉशिंग, टॉयलेटिंग, ड्रेसिंग, हाउसिंग, डोमेस्टिक एड्स, use of the furniture, use of the transportation things. So these are some basics. There are more. So let's come to the training. How to train the person. So let's understand this verbally. First, the we need to discuss about the washing and toileting techniques. So you can support the rails, बाथ और शावर सीट्स, और आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, जो वॉशरूम बोलो उसकी हाइट में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, बेसिन में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, एक रबर मैट लगा सकते हो ऑन द फ्लोर जिससे पेशेंट हमारा फॉल ना करे। सेम वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेसिंग। सो उनके लिए एक स्पेशल क्लोथ्स आते हैं, जिप फास्टनर्स आते हैं, वेलक्रो फास्टनर्स आते हैं, बिकॉज पेशेंट को बटन अप करने में दिक्कत होगी, सो जिप लगाने में ईजी होगा, वेलक्रो अटैच करने में ईजी होगा। सो इसी टाइप की सिमिलर अटैचमेंट्स आप पेशेंट्स के ड्रेसिंग्स में, उनके अप्लाइंस में हेल्प कर सकती है। नाउ लेट्स कम टू दी हाउसिंग, डोमेस्टिकेट्स और फर्नीचर। ये सब मॉडिफाइड होगा फॉर द डिसेबल्ड पेशेंट। पेशेंट की कंडीशन को देख के आप ये सारा सिस्टम मॉडिफाई कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशंस के लिए जो व्हील चेयर है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो रफ़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि व्हील चेयर के जो व्हील्स हैं वो स्लिपरी हो, जिससे पेशेंट स्लिप हो जाए। पेशेंट कभी भी उसे यूज़ कर सके। व्हील चेयर शुड बी इलेक्ट्रिकली फिट, सो पेशेंट कैन इटसेल्फ डू दी, जो भी उसे अगर चलना है तो वो चल पाए व्हील चेयर को ऑन करके, अगर रुकना है तो रुक पाए वो व्हील चेयर को ऑन करके। रूरल एरिया में ट्राईसाइकिल्स भी बहुत कॉमन है। मोटराइज व्हील चेयर्स हों, कार्स हों, विद स्पेशल कंट्रोल्स होने चाहिए कार्स में, जो भी पेशेंट के लिए नेसेसरी है वो। देन एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू एजुकेट द पेशेंट। स्पेशल पेशेंट्स के लिए या डिसेबल पेशेंट के लिए बहुत सारी वर्कशॉप भी अरेंज होते हैं, जिसमें डिसेबल पेशेंट्स आते हैं, वो अपना इमोशनल, अपना फिजिकल, अपना मेंटल, जो भी उनका हेल्थ है वो उसको वर्कशॉप्स में इस तरीके से बताया जाता है कि पेशेंट खुद कैपेबल हो, या उसका जो विल पावर हो इतना स्ट्रांग हो कि पेशेंट अपने आगे की लाइफ अच्छे से मैनेज कर पाए, एक प्राउड हो पाए उसे अपने ऊपर कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ जैसे आम लोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी पेशेंट है जिनका जो अकेडमिक एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा गुड है, बहुत अच्छा अकेडमिक एजुकेशन, जो भी जिनको भी ये डिसीज़ हो सकती है, सो उनका अकेडमिक इवेल्युएशन करके अकेडमिक नॉलेज को देख के फिर आप उनकी फर्दर, अगर उनका बहुत अच्छा है तो आप उसके लिए फर्दर हेल्प कर सकते हो इकोनॉमिकली। देयर ऑल्सो रूरल एरियाज़ में आजकल मोबाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी है, जिसमें जो मोबाइल वर्कर्स होते हैं वो फ़ोन करते हैं और वो पेशेंट के पास जाते हैं, इन विलेजेस और इन एनी कंट्री, वैन के थ्रू पेशेंट के पास जाते हैं और पेशेंट को पर्सनली जाके ट्रीट करते हैं और एजुकेशन देते हैं फॉर दी, जो भी पेशेंट की आगे की लाइफ है उनके लिए वो उससे एजुकेट करते हैं। ऑर्थोपेडिक वर्कशॉप्स भी होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है पोलियो विक्टिम्स का। प्लस आजकल ऐसे गेम्स भी हैं जिनमें डिसेबल्ड पेशेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और वो मेडल्स भी जीतते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द डिसेबल्ड पेशेंट। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना एक मोटिव खो देते हैं डिसेबिलिटी के बाद। सो रेडियो, फ़ोन, जॉकीज़ एंड टीवी, इंटरनेट, इन सब पे जो फिज़िकली डिसेबल्ड पेशेंट होते हैं, जो स्पोर्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो रिक्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, सो रेडियोज़, जॉकीज़, टीवी, इंटरनेट के थ्रू ऐसे पेशेंट्स जो अपना मोटिव खो चुके हैं उनको एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, एक अच्छा विल पावर मिलता है, एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से वो भी अपने आगे फर्दर जर्नी में अपनी खुद की मदद कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्चरी, स्विमिंग, टेनिस एंड टेबल टेनिस, ये बहुत ऐसे गेम हैं जो दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स के लिए बने हुए हैं। पेंटिंग, फोटोग्राफी, जिन अगर किसी पेशेंट की हॉबीज़ है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, वो इसमें आगे अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। सो या दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे। आई होप you like the video. Do subscribe and share this. Thank you so much.